First of all, I'll start like this. It's a very important historic visit. This will help not only in the political relations between India and Poland, but also on the business side. Because whenever a head of the state and at this stature, Mr. Prime Minister Modi, it will help the business community not only in Poland but in India also. So we are looking forward to the positive results, which we will see after the visit is fully over. Regarding the business prospects, because Prime Minister also spoke, he also addressed the community. He also touched upon a few areas which could be tapped on. Your thoughts on that, and what are the sectors which you think that both the countries can work together? Well, Poland and India is having a long history of working together already in the mining, in the food processing, food and agriculture, pharma. But I think the new industries, what Prime Minister Modi ji also addressed, generally in the AI, gaming industry as such. So these are the sectors which are really, booming in both the countries, and I'm sure cooperation on this will only increase the level of business being done. And one more important thing is, in India we have a Startup India program, and there are a lot of startups in Poland also. And tapping those also, it can be like building a future business prospects for both sides. I think this is a very positive step, and it's a very big thing that the Prime Minister of India has visited Poland. So I'm sure that this will do a lot of good for Poland and India. Regarding the business aspect is also very important. Your take in that regard, where both the countries can collaborate, you think that both countries should work together in that regard? Yeah, definitely. I think there will be a lot of collaboration. Even like I am also in exports of Polish apples to India, and of course import of spices from India to Poland as well as EU. So definitely there will be a bigger cooperation. Regarding you have also safeguarded Ukrainian families during the conflict as well. Can you just talk to us about that? Yeah, actually I was one of the first with my friend to visit the border when the war started. Yeah. And then later on, I took over more than 80 Ukrainian families. And they were staying in my office for the whole 1 year. So I was providing the food, accommodation, everything basically. So not only we took over the Indian the Indian our friends, but also the Ukrainians. Because Prime Minister did talk about the contribution you guys have made, yes, and also asked you to be the ambassadors as well. Yeah. Your thoughts, because Prime Minister did mention the way the Indians have marked their presence in Poland and the goodwill which they have. I think like going to the border and taking of the Ukrainian families, this is like our Prime Minister said, the guest is the most important, yeah. So I think this proves. मीटिंग तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री को मिल रहा है तो एक्साइटमेंट तो है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचा भी नहीं था कि होगा, एंड 45 इयर्स में पहली बार प्रधानमंत्री आ रहा है, तो वी आर एक्चुअली लकीएस्ट पीपल टू बी हियर. और ऑपरेशन गंगा के बारे में बताया तो भी इट वाज इन प्लान्ड कि आउट ऑफ अ हंच वहां पे गया हेल्प करने के लिए. एक ही सोच था, हमारे बॉर्डर पे इतना जवान लोग है, उसको कोई जानता नहीं, वो तो काम कर ही रहा है, हम तो सिर्फ 7 दिन के लिए जो कर पाए करे. तो व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री, एक मौका मिला वो लिया, वही किया. जिस तरीके से प्रधानमंत्री की विजिट हुई, अभी हमने देखा 2 दिन का विजिट रहा, आपके हिसाब से कैसा इनका विजिट रहा, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएं. ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का विजिट इज वेरी बिग, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. आप मोटरकेड देखा तो भी, फॉर एग्जांपल जब बाइडेन आता है उसको 30-40 गाड़ी का मोटरकेड है, इट्स सिमिलर कि पीएम मोदी का मोटरकेड तो इतना था. एंड ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, द विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पोलैंड भी वो सीरियसनेस पे ले रहा है, और डायस्पोरा प्लस पोलिश पीपल दे वेरी एक्साइटेड कि इंडिया का प्रधानमंत्री आ रहा है. एंड वो इम्पोर्टेंस तो देख ही रहा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट आदमी है यहाँ पे. ही इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ जर्मन चांसलर हु कम्स हियर, सो ही इज मच बिगर देन दैट. तो इंडिया का ग्रैंड स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड स्टेज वो ये विजिट पे आप देख सकता है. एंड 100% श्योर अभी इंडिया पोलैंड का रिलेशन जो लेवल पे थे उससे बहुत ज्यादा गुना आगे जाएगा. आपकी मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री से? यस. कैसी रही मुलाकात, उसके बारे में थोड़ा बताएं. क्या ऑफ कोर्स मैं जिन लोगों से एक लकी बोल सकता हूँ कि मिला, थैंक्स टू ऑपरेशन गंगा के वो जो पार्ट मैंने जो रोल प्ले किया, और उसने वो एक्नॉलेज भी किया था. पहला ऑनलाइन में मीटिंग हुआ था, और यस्टरडे सर को हाथ भी मिला पाया और बाजू में भी मिला. एंड क्या बोलूं, किड इन अ कैंडी स्टोर फीलिंग था. ऑब्वियसली ये सीइंग अ हीरो, एंड words can't explain the feeling.